of Revelation chapter 1:18, he says, I have the keys of death and hell with me. I hold the keys of death and hell with me. It is me. I have the right to decide whom should be saved and whom should not be saved. The word declares that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth and under the earth, and every tongue should confess. Every tongue should confess on earth and under the earth and in heaven that Jesus Christ is Lord. Holy Spirit, you are the finger of God. I ask you to keep your hands on me and fill me with your love, with the holiness, and with your power. Now this anointing is coming for you all over the world. Spirit in Jesus.
for giving us the mighty name of Jesus Christ, the name above all names. Bible declares that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God. Amen. 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 Let that word, Philippians 2, 9, 10 and 11, become flesh. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for all your promises. I ask you to send out your word. Renew our heart, renew our life, change our life. Make us all a new creation. We want to be changed. We want to be transformed, O Lord. Utu urum dalara kabara tu rosu buha urum dalara kabaru surutaraba tu laram darabahu karala tu lara urokadruhu. Hallelujah. Dielam barahata rakara urura shabarauram darakaluraha. I remember and pray for all the departed souls, those who are in bondages, those who are in the darkness, those who are slaves of the ancient serpent. Oh Lord, we pray for all the departed souls. We pray for all the evil spirits, those who are in bondages. Let the word touch them, O Lord. Let your word deliver them, O Lord. Send your mighty power upon every soul, every lost souls. I bind them in the name of Jesus Christ. I command them all to surrender and hear the word of God. You souls, hear the word of God. You lost souls who are in bonds, hear the word of God. Believe in the name of Jesus Christ. Your sins will be forgiven and you will be saved. You will be delivered from your bondages. Be free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let this word reach upon every departed souls, O Lord, every lost souls. Let them hear your word as you have promised in book of John 5-28. Let every souls hear your word. The dead will hear my voice. Yes, Lord, you have given us the promise. Let them hear your word, your voice through the Holy Spirit. And deliver all the departed souls. All our ancestors. We thank you for the mighty presence of our dear mother here. Oh, Mother Mary, Mother of Jesus. I declare that you are my mother and I am your son, your child, your servant. Thank you for all the blessings that you have given in my life, in our life. You are here, oh dear mother. Guide this heavenly banquet. It is the wish. We give everything to you, oh dear mother. As you were in the house of Cana of Galilee, as you came into the house of Zechariah, visited Elizabeth and anointed Elizabeth and John the Baptist, as you were with the disciples on the day of Pentecost, as you have guided them, trained them to receive the Holy Spirit, I ask you, dear mother, be with us in all these days. Help us, intercede for us. Help us to receive the mighty anointing of the Holy Spirit. Be with me every time. I am your child, your son, your servant. Empower me with your spirit, with your wisdom, with your knowledge, with your holiness. Oh, dear mother, I praise you. I thank you, dear mother. Hallelujah, glory. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And one more point I want to tell you. It is our responsibility to allow the word to become flesh. We should allow the word to become flesh. Mary received the word and she allowed that word to become flesh in her womb. That is Jesus Christ. The word that became flesh in the womb of Mary is Jesus Christ. We are hearing the word, we are going back. But remember, it's very important that
The incarnated word should be there in your heart. If the incarnated word is there in your heart, the living Christ will be there in your heart. Hallelujah. हमारे पिछले प्रभु के सेवकाई के वर्षों में जो अनुभव हमको मिला है, उसके आधार पर ये बात साबित हो गई है कि सालों पहले से लेके अब तक जितनी आत्माओं का देहांत हो गया है, वो सारी आत्माएं अभी भी शैतान के चंगुल में फंसी हुई है, वो अंधकार की खाई में पड़ी हुई हैं। और इस काल के इस समय में पिता परमेश्वर की दया आई है कि वो चाहते हैं कि वो सारे जो हैं वो उनके संतान हैं और उनको बचाना चाहते हैं। और इसके लिए प्रभु ने जो वचन हमारे द्वारा यहाँ पर सुनाया जाता है, ये इस सेवकाई की विशेष कृपा है कि आप जो यहाँ पर आपके पीढ़ियों के, आपके पूर्वजों के सदस्य बनकर यहाँ पर खड़े हैं, आपके द्वारा आपके पीढ़ी जो पीछे की तरफ जितने भी लोगों का देहांत आपके परिवारों में हो गया है, आप ये कहे हुए वचनों को स्वीकार करें और ये वचन उनके लिए आप स्वीकार कर रहे होंगे। आप स्वीकार करेंगे तो छुटकारा उनको भी मिलेगा। ये इस सेवकाई का रहस्य है और इसके द्वारा प्रभु आपको भी अनुग्रहित करेंगे और वो आत्माएं भी रक्षा को पा जाएंगी। मैं कहता हूं कि आप केवल वचन को स्वीकार कीजिए, जैसे मां मरिया ने गैब्रियल देवदूत के द्वारा आए हुए वचन को पहले स्वीकार किया और अपने में बस जाने की स्वीकृति दी, ऐसे ही और उसके साथ में ही यीशु का उनके गर्भ में गर्भाधान हो गया। वैसे ही यहाँ कहा हुआ वचन केवल आप उसको स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। आप जिस पैरिश से रिश्ता रखते हो, आप जहाँ रहते हो, जिस प्रदेश से आए हो, वहाँ पर जितनी भी आत्माएं, दिवंगत खोई हुई आत्माएं हैं, उन सब के लिए आप एक व्यक्ति के द्वारा रक्षा प्रभु दिलाएंगे। हालेलुया, Hallelujah. And I told you, Mother Mary received the word and she allowed that word to become flesh. माँ मरिया ने प्रभु का वचन स्वीकार किया और उसको अपने हृदय में, अपने में स्थान दिया। Hallelujah. हालेलुया। We are hearing the word, but it is very unfortunate that we are not allowing the word to become flesh. वचन सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई बात है कि हम प्रभु के वचन को अपने अंदर आने की स्वीकृति नहीं दे रहे And हैं। remember, it's very important that if the incarnated word is there in your heart, the living Christ will be there. प्रभु का वचन आपके शरीर में, आप में के हृदय में मांस धारण करता है तो यीशु क्रिस्त का आपके अंदर निवास है। Hallelujah. Hallelujah. If Christ is there, the Spirit of God will be there, the Heavenly Father will be there, and heaven will be there in your heart. यदि यीशु क्रिस्त आपके अंदर आ गए हैं तो पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है, पिता परमेश्वर वहां मौजूद है, स्वर्ग वहां मौजूद है। So, let us see how can we make the word to become flesh. हम प्रभु के वचन को हमारे में मांस धारण कैसे करा सकते हैं? Mother Mary heard the word माँ मरिया ने वचन सुना, from the angel Gabriel. उन्होंने महादूत गैब्रियल से प्रभु का वचन Mary सुना, accepted that word, received that word. उन्होंने उस वचन को स्वीकार किया। Receive means she believed the word. स्वीकार करने का अर्थ है उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया। When you believe the word, you are receiving the word. जब आप विश्वास करते हैं वचन पर, इसका मतलब है आप वचन को स्वीकार कर रहे हैं। And the second step is that और दूसरा चरण ये है, believe the word, then obey the word. आप वचन पर विश्वास कीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। Obey the word that you have received. आप उस वचन का पर आज्ञा पालन करना शुरू कीजिए। You all are believing in the word, but not obeying the word. आप वचन पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। So it is very important. The second step is that you have to obey the word. दूसरा चरण ये है कि वचन का पालन करना ही है और बिल्कुल करना ही है। When you obey the word, that word becomes flesh in your heart. और जब आप वचन का पालन करने लगते हैं तो वो वचन आपके साथ मिलकर एक हो जाता है। The word is there in your heart. You have believed the word, but
you take this second step, obey it. Obey the word. Take the decision to obey the word. Then it will become flesh. The living Christ will be there in your heart. वचन आया, आपने स्वीकार किया, सही है, आपके हृदय में आया, लेकिन आप उसको अपने जीवन में उसका पालन कीजिए। ऐसे करने पर वचन आपके जीवन में, आपके हृदय में मांस धारण करेगा। Hallelujah. 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 So, my dear brothers and sisters, it is very, very important. Otherwise, we won't get anything if we won't allow the word to become flesh. Very, very important. Let that word become flesh. Obey it. Obey the word. By obeying the word, you are allowing the word to become flesh. By that, you are allowing Jesus Christ to live in you. So the presence of God, this is the Lord in you, brings the presence of heaven in your life, in your heart. Let Jesus be there in your heart as your Lord and God. Hallelujah. हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ये बेहद ज़रूरी है कि आप विश्वास के साथ में वचन को स्वीकार करते हैं और उसको आपके अंदर ही आप उसका पालन करते हुए उसको मांस धारण करने का अवसर दीजिए। आप उसके प्रति वचनबद्ध रहिए। ऐसे में यीशु ख्रीस्त स्वयं आपके अंदर आके निवास करेंगे, पिता परमेश्वर आपके अंदर निवास करेंगे और ऐसे में आपका ये जो प्रयत्न है वो सफल होगा। Hallelujah. हालेलुया। Every word that we hear should bear fruits in our life. हर वचन जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में फल पैदा करने लग जाएं। Book of Isaiah, chapter 55, verse 10. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there until they have watered the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and succeed in the thing for which I sent it. इसैया नबी का ग्रंथ 55वां अध्याय 10 के आगे का वचन, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर पूरे भूमि को सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाएं और हरियाली के से ढके बिना वहाँ से नहीं लौटते हैं, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुंह से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे करने देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरा वचन मेरे पास वापस आता है। Hallelujah. हालेलुया। So here God says that it is like a rain which comes from heaven and bearing fruits on earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. God says that I am sending out the word. It will not come back. It will not return empty. It will produce fruits either on earth or in the life of a human being. It will bear fruit. It will produce fruits. प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आकाश में से पानी और बर्फ भूमि के ऊपर उतरकर भूमि के सूखेपन को हटा के उसको उपजाऊ बना के उस पर हरियाली ढक के उसमें भूमि पर बीज बोने वाले के लिए बीज देता है, खाने वाले के लिए अनाज देता है, वैसे ही मेरे ज़बान से निकला हुआ हर वचन, चाहे वो धरती पर हो चाहे मनुष्य के आत्मा और हृदय में हो, जाता है वहाँ अपना कुशल काम करता है और तभी वो वापस आता है। God says that it shall not return to me empty. The word will not return to him empty. प्रभु कहते हैं मेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बिना काम किए वो कभी नहीं रह सकता, वो काम करके ही वापस आएगा। But it shall accomplish
that which I purpose. और लेकिन मेरा वचन, भेजा हुआ वचन अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा And succeed the thing for which I send it. और वो मेरा उद्देश्य पूरा करेगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। The word I send out will fulfill my plans. मैंने जो वचन कहा है वो मेरी इच्छा को पूरा करके ही लौट कर It आएगा। will not come back empty. वो खाली हाथ कभी वापस नहीं I आएगा। am sending it so as it should bear, it should produce fruits. मैं अपना वचन भेजता हूँ ताकि वो वहां पर फल पैदा करें। That means that, my dear brother, my dear sister, this word sending out by our Heavenly Father, and the words that you have received earlier, those words that you have heard, is sown into your heart. It is still there, but not producing any fruits. Not bearing any fruits, it is there as a seed. As a seed, it is there. You have to allow that seed to sprout, to grow, and to bear fruits. We have to allow the word. I told you we have to allow it to become flesh, to allow it to start produce fruits. We need fruits. When we hear the word, God is willing us, through the word, He is willing to give us its fruits. So we need the fruits of that word. It is sown into your flesh, it is in your blood, it is in your mind, in your heart. It is there, not bearing any fruits. But when you allow the word to become flesh, that is the word that you have received, the word that you have believed, you obey the word. Just obey the word, immediately start to bear fruits in your life. Hallelujah. Hallelujah. That is the key. Obey the word. Obey it, you will have blessing, you will have protection, you will have the Holy Spirit, you will have the strength and power. You will have everything from heaven in your life. इसका मतलब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमारे अंदर आ गया है, वो हमारे रक्त में है, हमारे मन में है, हमारी यादों में है, लेकिन वो वहाँ निष्क्रिय होकर पड़ा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो कमी कहाँ रह गई है? कमी केवल यही है कि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि हम पालन करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर आया हुआ वचन फल पैदा करेगा। प्रभु चाहते हैं कि उनका भेजा हुआ वचन फल पैदा करने लग जाएं, और वो फल पैदा होना हमारे अंदर है कि हम उन वचनों का पालन करें, तो प्रभु की इच्छा पूरी होगी कि वो वचन हमारे अंदर फल पैदा कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Let's all close our eyes. Remember, the seed, that is a word which is sown earlier. Through many retreats, that the word that they have heard is there in your flesh, in your blood, in your mind, in your heart, which is not bearing any fruits. After sowing the seed of a plant on the ground, it is your responsibility to pour water. Then only it will grow. The same way, you have received the word by believing in the word. The word is there in your heart. You have to water it. That is the immediate second step. You have to obey the word. When you obey the word becomes flesh. It will start to grow. First it becomes like a plant, then it becomes as a tree, then it starts to bear fruits. Each and every word that you have received, let it bear fruits in your life. Let it produce fruits, good fruits of God. We surrender ourselves before you, O Lord. पहले का
आपने जो ध्यान सभाएं में आप सम्मिलित हुए हैं, उनके द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु का वचन आपके अंदर आ गया है, आपकी आत्मा में है, आपके मन में है, आपके रक्त में है, लेकिन वो अभी भी निष्क्रिय होकर वहाँ पड़ा हुआ है। इसीलिए उसका दूसरा चरण केवल यही है कि आप उसको विश्वास के द्वारा आपने उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन आप अभी उसको पालन करना शुरू कीजिए। आप जब पालन करेंगे तो प्रभु का वचन आप में मांस धारण करेगा। वो बीज के रूप में है, वो पहले अंकुरित होगा, वो फिर छोटा सा पौधा बन के खड़ा रहेगा और उसके बाद में वो वृक्ष बनेगा और भले फल पैदा करने लगेगा, अच्छे फल पैदा करने लगेगा। Keep your hands on your chest. Let us give ourselves to the Lord. We heard that it is He who brought you here. It is the plan of God that you should be here and hear the word. Lord, I give myself to you. It is you who brought me here. Thank you for bringing me here. As you have promised, I ask you to sprinkle the clean water upon me. That is the word. I ask you to cleanse me, O Lord, by your word. Sanctify me. Purify me, O Lord. And you have given us the promise that you will send out your word and heal us from our diseases. Send out your word and heal us, O Lord. Sanctify us, heal us, deliver us. Send out your word. Break every bondage in our life. Make us free. Lord, I am standing as a representative of my ancestors. Allow the ancestors, the departed souls, to hear the word through me, because I am a representative of this generation. I am their representative. Let them hear your word through me. Open the graves. Allow the souls to hear the word. Make them free. And I ask you, my Father in heaven, to give me the grace to let the word to become flesh in my heart. I ask for the help of Mother Mary. After hearing the word, she believed the word and obeyed it in such a way. She made it flesh. Give me the grace. I ask Mother Mary to help me to believe and keep the word, so that the word may become flesh in my heart. In such a way, the living Christ may dwell in me, live in me. I surrender myself to you, Lord. Give me the grace, Holy Spirit, to keep the word, to keep the commandments given to me. Help me, Holy Spirit, and forgive me not for obeying the word in my past life. I surrender myself. I ask for your mercy. I ask for your blessing. Lift up your hands to heaven. Worship the Lord. Hallelujah. Praise and thank you. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Oh, we praise and thank you, Lord. Hallelujah. 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 Glory. Help me, O Lord, to believe your word. Help me to obey the word. Help me to make it flesh in my heart. Hallelujah. 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 We praise and thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise and thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 All together. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit,